Good morning, students. Today we are going to discuss the last part that comes under nature and significance of management. Right, students? Nature and significance of management. First part we have already discussed in the form of revision. Now we are going to discuss the next part in the form of revision. Nature and significance of management, students. So let's start. Nature of management. Right, students? Nature of management consists of management as a science, management as an art, or management as a profession. We have to discuss one by one what you mean by the term management as a science. Students, science is a systematized body of knowledge that explains certain general knowledge and the application of general laws. Right, students? हमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज अ साइंस जो ए पार्ट है उसमें हमें ये बताना है वी हैव टू डिस्कस दैट वेदर मैनेजमेंट इज अ साइंस और नॉट. राइट स्टूडेंट्स, साइंस के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वी हैव टू डिस्कस दिस under this topic. So students, is management as a science? So science is a systematized body of knowledge that explains certain general truth or the applications of general laws. Is management as a science? So let's discuss the characteristics one by one. Right students? So the very first characteristics of management is systematized body of knowledge. Right students? So under this is बेटा जिस तरीके से साइंस की अपनी नॉलेज होती है, अपनी थ्योरी होती है, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट की भी अपनी नॉलेज होती है, अपनी थ्योरी होती है, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं. सो आई कैन से दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. राइट, सिंस अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज डेवलप्ड आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन लाइक साइंस in management also there is applicability of systematic and organized body of knowledge and study material. So I can say this feature of science is present in management. तो बेटा फर्स्ट फीचर जो था साइंस का वो प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. नाउ कम टू द सेकंड फीचर दैट इज नोन एज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. राइट स्टूडेंट्स, सो जिस तरीके से बेटा साइंस के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपनी थ्योरी होती है, अपनी नॉलेज होती है, उसी तरीके से मैनेजमेंट हैव गॉट देयर ओन प्रिंसिपल्स नॉलेज. Right students, so I can also say second feature of science is also present in management. Right students, like scientists test science principles under different conditions and places. Similarly, managers also test and experiment managerial principles under different conditions in different organization. So this feature of science is present in management. I hope second feature is also present in management, students. Now come to the third one. The third one is beta इसके अंदर universal validity. Now what do you mean by the term universal validity means, students? Universal validity means साइंस बेटा पूरे यूनिवर्स में एक से अप्लाई होती है, लेकिन बट द मैनेजमेंट दे आर नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली. मैनेजमेंट मॉडिफाइड हो जाता है, चेंज हो जाता है चेंजिंग कंडीशंस के साथ. सो आई कैन से दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. यूनिवर्सल वैलिडिटी मीन्स साइंस इज एप्लीकेबल and apply in whole universe at the same situations and at the same time. Right students, but management cannot be at the same in all the times. Management has to be modified as per the changes taking place in the organization. Right students, so I can say this feature of science is not present in management. Next beta fourth है logical and systematic and scientific observation. Right students, under this, the scientists perform logical observation before deriving any principles or theory. But manager observe human beings and observation of human beings cannot be fully logicals. बेटा साइंस के अंदर हम लॉजिक से काम लेते हैं और जो लॉजिक जो होते हैं वो 100% एप्लीकेबल होते हैं. बट मैनेजमेंट के अंदर बेटा हम काम लेते हैं मैनेजर से, ह्यूमन बींग से. जो ह्यूमन बींग होते हैं उनका लॉजिक बेटा हमेशा 100% फुली एप्लीकेबल नहीं होता है. तो आई कैन से दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. सो बेटा कंक्लूजन ये कहता है बेटा कि अमंग फोर फीचर्स द वेरी फर्स्ट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. इट इज वेरी मच प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, इट इज वेरी मच प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. यूनिवर्सल वैलिडिटी, इट इज नॉट प्रेजेंट. एंड लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इट इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट. So among four features of science, students, two features are present in management and two features are not present in management. So I can say management is not a science. It is an inexact science or soft science. It is not a pure science like physics or chemistry, because in management we deals with human beings and the behavior of human being keeps on changing. Right students? So conclusion ही कहता है बेटा on comparing the features of science with management, we conclude that management is an inexact science or soft science
It is neither natural or pure science like physics or chemistry, because in management deals with human beings whose behavior cannot be accurately predicted. तो बेटा आंसर इसमें ये हुआ, मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस, इट इज अ सॉफ्ट साइंस, इट इज नॉट अ प्योर साइंस लाइक physics or chemistry. I hope management as a science is very much clear to you students. So now come to the next one, management as an art. Next topic is management as an art. Right students, what do you mean by the term art? Art is the skillful and personal application of existing knowledge to achieve the desired result. It can be acquired through study, observation and experience. Right students? So what do you mean by the term art? किसी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की थ्योरेटिकल नॉलेज को बेटा हम आर्ट कहते हैं. राइट स्टूडेंट्स? सो आर्ट कंसिस्ट ऑफ 3 फीचर्स. राइट, सो वी कैन से, हमें बेटा इसमें ये देखना है कि ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट और नॉट. राइट स्टूडेंट? द वेरी फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. राइट, तो बेटा फर्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज में हम देखेंगे art is based on the existence of some theoretical knowledge of concept, like various books of different ragas are available in music. Right students, if you want to listen the music or if you want to study the music, if you want to, अगर आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो different books of ragas are available in music. Similarly in case of management also, if you are going through the management, then various literature are applicable in the management and various techniques and principles are applicable in the management. So I can say this feature of art is present in management. Now come to the second one, personalized application. बेटा आर्ट सबकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है. लाइक 2 dancers, 2 doctors, 2 lawyers, 2 actors, they have got their own performing skills. Similarly in management also, in a company also, 2 managers have got their own working skills. Right students? So I can say this feature of art is also present in management. Art is a personalized concept as everyone applies the theoretical knowledge in his own way. Like 2 dancers, 2 actors always differ in performing their art. Similarly in management also, every manager has his own way of managing things and people in the organization. So this feature of art is present in management. Alright students, come to the third one, based on practice and creativity. Third है बेटा इसमें based on practice and creativity. Now what do you mean by based on practice and creativity? Art involves the continuous practice of existing theoretical knowledge. Management satisfies this criteria as manager gain experience through regular practice and becomes more effective. Right students? So the artists require regular practice of art to become perfect. Same way managers also improve their managerial skill efficiency with regular practice in the organization. So we can say this feature of art is also present in management. So बेटा देयर आर 3 फीचर्स, हमने 3 फीचर्स पढ़े बेटा इसके अंदर, एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, एंड वी फाइंड दैट ऑल द 3 फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. कंक्लूजन ये कहता है बेटा मैनेजमेंट इज फुली आर्ट. राइट स्टूडेंट्स, एज इट सेटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया ऑफ आर्ट. होपफुली इट इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसके अंदर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. राइट स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में अभी आपने पढ़ा था बेटा, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, उसी तरीके से बेटा क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन में आता है. मैनेजमेंट साइंस नहीं है, वो बेटा पार्शियल साइंस है. मैनेजमेंट पूरी तरीके से आर्ट है स्टूडेंट्स. नाउ इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. सो लेट्स डिस्कस मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. प्रोफेशन रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग एंड टू विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड. राइट स्टूडेंट्स? So there are different characteristics of profession. हमें ये देखना है बेटा कि are all the characteristics of profession comes under management. The very first is well defined body of knowledge. Right students? जिस तरीके से बेटा हर एक प्रोफेशनल फील्ड में अपनी नॉलेज होती है, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपनी थ्योरी होती है, उसी तरीके से बेटा मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरी, अपने प्रिंसिपल्स, अपनी नॉलेज होती है. राइट स्टूडेंट्स, वेरियस बुक्स आर अवेलेबल ऑन द मैनेजमेंट. So I can say this feature, the very first feature of profession are present in management. So let's discuss. Every profession has a systematic body of knowledge which can be learned through instructions. In case of management, there is availability of systematic body of knowledge as large number of books are available on management studies. So I can say this feature of profession is present in management. Restricted entry students. This is the second one. Restricted entry. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री में स्टूडेंट्स ये देखा जाएगा बेटा. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री में हम ये देखेंगे
अंडर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री में स्टूडेंट्स द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री, राइट स्टूडेंट्स. सो वी कैन से हर एक प्रोफेशन के लिए देर इज एन एंट्रेंस एग्जाम, राइट स्टूडेंट्स. सो इन मैनेजमेंट ऑल्सो इज देर इज एनी एंट्रेंस एग्जाम? नो बेटा, मैनेजमेंट के लिए हर जगह एंट्रेंस एग्जाम पॉसिबल नहीं है. देर आर वेरियस स्मॉल कॉलेजेस जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है. सो द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज डॉक्टर ओनली when he is having MBBS degree, whereas there is no restriction on any person being appointed as manager. So presently this feature of profession is not present in management, right students. Second वाला बेटा present नहीं है management के अंदर. Third, come to third, professional association, right students. So under professional association में बेटा क्या है? Professional association में for all the profession association there are established, every professional has to get himself registered with the association, right students. डॉक्टर, टीचर, लॉयर से बेटा इनको अपने प्रोफेशन के एसोसिएशन से जुड़ना पड़ता है, राइट. बट इन मैनेजमेंट इट इज नॉट कंपल्सरी. फॉर एग्जांपल, टू बिकम अ लॉयर वन हैव बीन अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया. To become a doctor one must have to the member of the medical council of India. To become a chartered accountant one must have the member of the Institute of Chartered Accountancy of India. But under management it is not compulsory to become the member of the All India Management Association or All India Manager Association. I hope this feature of profession is not present in management and it is not compulsory. However, it is moving in that direction, right students. So for all profession associations are established and every professional has to get himself registered with his association before practicing that profession. For example, a lawyer has to become a member of Bar Council to practice law in India. In case of management, it is not compulsory for a manager to be a member of any management association. So presently this feature of profession is not present in management, right students. Now come to the another one. The another one is ethical code of conduct. As right students, rules and regulations, you have to follow the rules and regulations regarding ethical code of conduct mein beta, right students. So all professions are bound by a code of conduct which guides the behavior of its member. For example, all doctors take the oath of the ethical practice at the time they enter the profession. All India Management Association has laid down a code of conduct to regulate the activities of its member, but its membership is not compulsory for all managers. So this feature of profession is not fully present in management, right students. So we have studied 4 features, only one feature is present and rest of the feature is not present under management. Now come to the fifth one. The fifth one is service motive, right students. The basic purpose, the basic purpose beta हर एक profession का होता है to serve the customers with dedication, right students. For example, the work of a lawyer is to ensure that his clients get justice. In management, the main aim of the organization is to achieve the organizational goals, which is generally profit maximization. So presently, this feature of profession is not present in management, right students. The basic motive of management of an organization is profit maximization and not social service, right students. So therefore, we can say this feature of profession is not present in the management, right students. However, it is moving in that direction, right. So among 5 features, we have studied the 5 features students. The very first is well defined body of knowledge. Second is restricted entry. Well defined body of knowledge, it is present. Second, restricted entry, it is not present. Professional association, of course it is not present. Ethical code of conduct, it is not present in management. Service motive also, it is not present in management. So beta conclusion क्या कहता है? What conclusion can we draw from management as a profession? Management as a profession से बेटा ये conclusion draw होता है. Management is not a full-fledged profession. However, it is moving in that direction. Finally, it can be concluded that management does not have all the necessary features of a profession, but is fast moving in the direction of becoming a profession. All professionals enjoy higher status in every society, right students. So management is not a full-fledged profession like legal, accounting or medical profession, because it does not meet the exact criteria of a profession, but however it is moving in that directions. I hope students this nature of management is very much clear to you. Now come to the next topic, functions of management students.
functions of management, you know, there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing, and controlling. At the end, we discuss this, all the 5 topics, students. Just see the diagram. Management functions at different levels, right? Planning and organizing is a function of top level management. Staffing and directing is the function of middle level management, and controlling is the function of lower level management. From this diagram, it is very much clear to you, students. So top level management concentrate on planning and organizing, right students. Middle level keeps their focus on staffing and coordinating, right students, and lower level, right students, on directing and controlling. So come to the next one बेटा, इसमें next पे चलेंगे बेटा, functions of management क्या है, right students? The functions of management. Planning. Student, planning, it is the first, the base, the prime function of management, right students? Planning help decide in advance what to do, where to do, how to do, and who is to do it. It is the first, the base, the prime function of management. Planning is based upon forecasting. Planning बेटा हम present में करते हैं, किसके लिए? Future के लिए करते हैं. Therefore, it is based upon forecasting. Planning is a trap to capture the future. Right, students? Planning is a trap to capture the future. So, students, planning, it is the first, the base, the prime function of management, student. Planning helps decide in advance what to do, where to do, how to do, and who is to do it. Planning is a trap to capture the future. Planning is done in present for future of students. Right? Planning bridges the gap between where we are and where we want to go. Right, students? Planning bridges the gap between where we are and where we want to reach. Right, students? So these are the different functions of management. Planning is the among the most important function. Right? Top level management plans करता है बेटा, plans and policies बनाता है. उन plans and policies के अंदर हम ये decide करते हैं कि planning किस तरीके से करनी है. So planning refers to deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who is to do it. Planning bridges the gap between where we are and where we want to reach. Every manager starts with deciding in advance the objective of an enterprise and how to achieve these objectives. Planning is the base for all management functions. Right, students? Planning cannot prevent problems, but it can predict them and prepare contingency plans and to deal them if they when occur. Right, students? The second one is organizing. राइट स्टूडेंट्स, अब सेकंड कौन सा बेटा जी? ऑर्गेनाइजिंग है. ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग हो चुका है. सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है बेटा? ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज का अरेंजमेंट होता है. प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट. सो ऑर्गेनाइजिंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बेटा राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज असाइन करी जाती हैं, डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं. राइट स्टूडेंट्स, इसमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करी जाती है और इसके अंदर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं. राइट स्टूडेंट. सो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स assigning duties, grouping tasks, establishing reporting relationship, and allocating resources required to carry out a specific plans. Plans हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर बना लिए हैं. ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बेटा हम उसको रिसोर्सेज में कन्वर्ट करेंगे. It determine that activities and resources are required. कि what are the resources required? How many departments are needed? And what are the resources required? Man, machine, material, money, method. Right, students? It decides who will do a particular task, where it will be done, and when it will be done. Who will do a particular task, where it will be done, and when it will be done. Organizing involves grouping of tasks into manageable departments or work units and the establishment of authority and reporting relationship within the organizational hierarchy. Right, students? Proper organizational techniques helps in the achievement of work and promote both the efficiency and operations and effectiveness of results. Different kinds of business require different organization structure according to the nature of the work. Students, there are two types of organization structure that comes under organizing. Basically, organizing means arrangement of resources. There are two types of organizational structure that comes under organizing, that is known as functional structure or divisional structure. Now, what do you mean by the term functional structure? Whenever a company makes only one product, then one department is required. That is known as functional structure. But when a company is making more than one type of products, then divisional structure is decided to adopt. Divisional structure means number of products manufactured in the organization. जितने products होंगे बेटा उतना डिपार्टमेंट होंगे. फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक प्रोडक्ट, एक डिपार्टमेंट. राइट स्टूडेंट्स?
डिविजनल स्ट्रक्चर में 4 प्रोडक्ट है तो सबके 4 डिपार्टमेंट होंगे सेपरेटली, राइट. आई होप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज वेरी मच क्लियर टू यू. सो प्लानिंग द बेस फंक्शन, organizing the resource function. Now come to the staffing. Staffing is very much important, students. Staffing means right man, right job, right time and right place, right students. It is the third steps that comes under the functions of management. Recruitment, selection, training, development, compensation and promotion of employees are required, right. Finding out the right man for the right job, that is known as staffing. So staffing is the key function of management, students. Staffing simply means finding the right person for the right job. Staffing is an important aspect of management to make sure that the right people with the right qualifications are available at the right place and time to achieve the goals of the organization. This function of management involves activities such as recruitment, selection, placement, training of personnel. ये बेटा जब staffing आएगा, actually these are the chapters. फंक्शंस है बेटा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. दीज आर द चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 43 मार्क्स. आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, राइट स्टूडेंट्स. आफ्टर दिस चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के बाद आपका स्टार्ट होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बाद आपकी ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे. दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड दे बिकम द चैप्टर लेटर ऑन, राइट स्टूडेंट्स. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग स्टार्ट हो जाएगा. सो उसमें डिटेल में बेटा आएगा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, placement and training of personnel. Staffing function of management also known as the human resource function or the key function of the organization, right students. So staffing means filling the roles, jobs को भरना बेटा, right. Recruitment का मतलब होता है अप्लाई करना जॉब के लिए. Selection का मतलब होता है बेटा जितनी वैकेंसीज होंगी उतने सिलेक्शन होंगे. Placement का मतलब होता है बेटा कि सपोज करिए एक वैकेंसी है, 10 लोगों ने अप्लाई किया, दैट इज नोन एज रिक्रूटमेंट, राइट. सिलेक्शन कितने का हुआ, एक का हुआ, बाकी 9 रिजेक्शंस होंगे क्योंकि सीट एक ही है, वैकेंसी एक ही है. प्लेसमेंट, उसको जॉब देना, जॉब देने के बाद उसको ट्रेनिंग पर भेजना. पर्सनल का मतलब होता है यहाँ पर एम्प्लॉयज से. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट बेटा इसके अंदर डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स. डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस. डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस देना एम्प्लॉयज को. Directing means telling people what to do and seeing that they do it in the best of their ability. Directing means telling people what to do and then seeing that they do it in the best of their ability. Directing is telling people what to do and then seeing that they do it in the best of their ability. It involves, जब भी आप किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं काम, राइट स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, राइट स्टूडेंट्स. दीज आर द 4 things, 4 tools of directing that you are apply while you are giving directions to anyone, right students. This is the directing is the relationship between superior and subordinates. So it involves leading, influencing and motivating employees to perform the task assigned to them. This requires establishing an atmosphere that encourages employees to do their best work. Motivation and leadership are the 2 components of directing. Motivating workers mean creating an environment that makes them work willingly एंड एंथुसियास्टिकली. इसका मतलब ये होता है बेटा, मोटिवेशन का मतलब बेटा स्टूडेंट्स इसमें ये होता है कि मोटिवेशन का मतलब स्टूडेंट्स इसमें ये होगा कि किस तरीके से हम एनकरेज करते हैं अच्छा काम करने के लिए. डायरेक्टिंग, सो डायरेक्टिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, राइट स्टूडेंट्स, जिससे कि कंपनी का गोल, टारगेट, प्रॉफिट अचीव हो जाए. देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन. So we have studied 4 functions. Planning, the base function of management, right students. Organizing, the resource function of management, जिसमें departments बनाए जाते हैं. Staffing, right man, right job, right time, right place, students. Directing means to give the work, to direct the work, relationship between superior and subordinate. Superior जो work ले रहा है और subordinate जो work, right students, ले रहा है. Superior जो work दे रहा है और subordinate जो work ले रहा है. Right students, there is a relationship between superior and subordinate students. Now come to the last function, that is known as controlling. Right, what do you mean by the term controlling? This is the last function of management. This is also known as checking function. बेटा इसको हम checking function भी बोलते हैं, right students. That standard as per the plans. जो भी students मैनेजर कंट्रोलर ने गुड्स बनाने के लिए दिए हैं अपने एम्प्लॉयज को, now these goods are as per the plan that comes under controlling. Right, it is the last function of management, but
Students, it complete one cycle and it starts the other cycle of management. For example, planning, organizing, staffing, directing and controlling. उसके बाद बेटा अगेन क्या स्टार्ट हो जाएगा? Planning, organizing, staffing, directing and controlling and so on. Controlling completes one cycle and it starts the other cycle of management. Right students, it cannot be misunderstood at the last function of management. इसके अंदर बेटा it is a checking function, ये lower level management का function होता है. So let's discuss. Controlling is the management function of monitoring organizational performance towards the achievement of organizational goals. It involves establishing standard of performance. Right students, कि वर्कर्स को हमने जितने गुड्स बनाने के लिए दिए थे उन्होंने उतने बनाए नहीं बनाए. मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस. राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे. तीन ही कंडीशंस होंगी स्टूडेंट्स, या तो गुड्स पूरे बने होंगे, या कम बने होंगे, या ज़्यादा बने होंगे. जब गुड्स पूरे बने होंगे देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर द मैनेजमेंट. अगर गुड्स ज़्यादा बने होंगे देयर इज ऑल्सो नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर गुड्स कम बने होंगे नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम. यहाँ पे प्रोडक्शन सफ़र करेगा. सो इट इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयर इट विद द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. अब बेटा करेक्टिव एक्शंस में हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द करेक्टिव एक्शंस रिक्वायर्ड, कि प्रोडक्शन क्यों कम है, कम क्यों हुआ. वर्कर की नेग्लिजेंस थी, पावर फेलियर था बेटा, रॉ मटेरियल ठीक टाइम पे नहीं पहुंचा. Right students, so these are the effective measures taking in controlling function. So we have to match the standard as per the goals. Right students, here management must determine what activities and outputs are critical to success, how and where they can be measured, and who should have the authority to take corrective actions. Right students, so controlling is also a chapter students. We have to discuss the chapter in detail. All these chapter we have to discuss in detail. Planning, organizing, staffing, directing and controlling. Controlling function refers to all the performance measurement and follow-up actions that keep the actual performance according to the planned performance. Actual performance according to the planned performance. I hope it is very much clear to you students. Now these 5 functions becomes the 5 chapters. और बेटा ये 5 chapters आपके आगे डिटेल में चलेंगे. These 5 chapters, the weightage of these 5 chapters consist of beta 42 marks, right students, near about. So I hope the rest of the nature and significance part, management part is over now. Now in the next video students, I am going to give you the case studies of the next half of the chapter that consist of the topics based on functions of management, nature of management, management as a science, art or profession. If you find any difficulty you can ask me. Mark present in the comment box students. एंड बेटा लिसन एंड वॉच द वीडियोस वेरी मच केयरफुली स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तब तक आप केस स्टडी नहीं कर पाएंगे. स्टूडेंट्स, वॉच माय प्रीवियस वीडियोस ऑन यूट्यूब ऑल्सो, जिसमें मैंने आपको बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन दिया है. दिस इज इन द रिविजन फॉर्म. टुडे आई हैव टू गिव वन मोर वीडियो, सो मार्क प्रेजेंट बोथ इन द कमेंट बॉक्स एंड वॉच द वीडियोस वेरी मच केयरफुली. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी एनी टाइम स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू द टेस्ट. टेस्ट बेटा पूरे चैप्टर का एक साथ हो जाएगा, बिकॉज दिस इज सपोज टू बी द स्मॉल चैप्टर. इसमें हमें 2 पार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स. सो वॉच द वीडियोस. आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर वीडियो बेस्ड ऑन द केस स्टडीज. देन इन द नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू गिव यू द टेस्ट स्टूडेंट्स based on chapter nature and significance of management, and after the test we will start the next topic, the next chapter, that is known as principles of management. Right students, so watch the videos very much carefully. राइट, मैंने बेटा आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी भेजी हुई है. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखिए स्टूडेंट्स. आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में से की पॉइंट्स उतार कर आप अपने असाइनमेंट कॉपी में रखिए. उसके बाद बेटा मैंने आपको इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी भेजे हुए हैं. शॉर्ट चैप्टर भेजा हुआ है मैंने आपको, शॉर्ट फॉर्म में चैप्टर भेजा हुआ है. उसमें बेटा माइंड मैप्स भी हैं. इट इज़ नाउ वेरी मच ईजी टू यू टू लर्न द माइंड मैप्स, एज माइंड मैप्स इज वेरी मच ईजी टू सॉल्व द केस स्टडीज एंड OTQs और MCQs स्टूडेंट्स. राइट स्टूडेंट्स, so watch the videos very much carefully students. Okay students.